Assalamu alaikum dear students. I'm Saiful Islam and you are watching and learning zoology with its professor. Today we'll be discussing the third group of animal-like protists, the zooflagellates that move by flagella. Just like the sarcodines and the ciliates, zooflagellates are also members of the kingdom Protista, subkingdom Protozoa, phylum Sarcomastigophora, subphylum Mastigopora, class Zoomastigopora, and their representative members include Trypanosoma, Giardia, Trichonympha, leishmania, etc. A prominent feature of the zooflagellates is the presence of a flagellum, that is a long whip-like structure used for movement. There are zooflagellates whose flagella carry them in straight paths, while there are other zooflagellates that span through water. हैबिटेट के लिहाज से zooflagellates दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ symbiotic relationships भी एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा जो कि एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और वो दीमक जिसको हम वाइट एंट्स या टर्माइट भी कहते हैं उसके गट के अंदर रह रहा होता है। अब दीमक या टर्माइट लकड़ी तो खाता है लेकिन इसके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर एंजाइम यानी सेलुलेजेस नहीं होते। ट्राइकोनिम्फा जो कि एक जूफ्लैजिलेट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है वो टर्माइट के गट के अंदर सेलुलेजेस रिलीज करता है और इन सेलुलेजेस की मदद से एनर्जी रिच सेलुलोज इसके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स यानी शुगर्स और स्टार्चेस में कन्वर्ट हो जाता है और यूं ये एंडोसिम्बायंट यानी ट्राइकोनिम्फा न्यूट्रिएंट्स के अलावा टर्माइट से शेल्टर भी हासिल करता है और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। In addition to mutualistic zooflagellates, there are parasitic zooflagellates as well. For example, Trypanosoma and leishmania. These parasitic zooflagellates cause diseases of serious nature in human beings. For example, African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness, is a disease that is caused by various strains of Trypanosoma and that is spread by tsetse fly. Similarly, leishmaniasis is another disease that is caused by leishmania and spread by sand fly. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करने वाली सीसी फ्लाई को साइंटिफिकली ग्लोसिना पाल्पैलस कहा जाता है, जबकि ट्राइफेनोसोमा के अंदर दो मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल सबस्पीसीज मौजूद हैं, जिनमें से एक को ट्राइफेनोसोमा ब्रोसाए गैम्बियंस जबकि दूसरे को ट्राइफेनोसोमा ब्रोसाए रूडिसियन कहा जाता है। अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस दो स्टेजेस में वकूपजीर होता है। पहले स्टेज यानी हीमोलिम्फेटिक फेज में सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम इन्वेड होते हैं और लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, जबकि दूसरे स्टेज यानी न्यूरोलॉजिकल फेज में पैरासाइट मेनिंजीज यानी ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अटैक करता है और स्लीपिंग सिकनेस के टिपिकल अलामात इसी न्यूरोलॉजिकल फेज में अपीयर होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी अलामत स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना है और मरीज इंसोम्निया या बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। ट्रीटमेंट के बगैर ये इनवेरिएबली एक फैटल डिजीज़ है और इसमें मेंटल डिटेरियोरेशन की वजह से मरीज पहले कोमा और फाइनली डेथ में चला जाता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फेज में होने वाला डैमेज इर्रिवर्सिबल होता है। Let's watch this video. The life cycle of Trypanosoma cruzi in the human host. The trypanosome life cycle begins with a triatomine insect, which is infected with T.cruzi, biting a human host. Following the ingestion of blood, the metacyclic trypamastigotes are released with the feces from the insect near the area of the bite. Observe that the parasite enters the host through the bite site when the host scratches the site or when the parasite moves to a region covered by mucosa. The parasite reaches the mammalian bloodstream and subsequently invades different cell types that it encounters, such as macrophages, muscle cells,
epithelial cells, and neurons. In this example, the attachment of the trypomastogote form of the parasite to the macrophage surface is observed. The process of internalization via phagocytosis begins with the formation of pseudopods. During and after the internalization of the parasitophorous vacuole assembles. Host cell lysosomes migrate toward the internalization region and fuse with the parasitophorous vacuole. The lysosomal content is released in the vacuole. However, the parasite is not affected. In the vacuole, the trypomastogote transforms into an amastogote. This transformation is accompanied by the disruption of the parasitophorous vacuole membrane. The amastogotes are released into the cytoplasm of the host cell and divide multiple times. Following division, the amastogotes transform into trypomastogotes, which show intense and constant movement that culminates with their bursting out of the cell. The trypomastogotes reach the extracellular space and, subsequently, the bloodstream. The parasites will now infect new cells. As stated earlier, leishmaniasis is spread by a fly of the genus Phlebotomus, which is a vector or carrier of the zooflagellate leishmania. Leishmania as a genus contains more than 20 species, among which Leishmania donovani and Leishmania mexicana are the popular species. Leishmaniasis occur in three major forms, the most fatal of which is visceral leishmaniasis, which is characterized by fever, weight loss, enlargement of the spleen and liver, and the patients become anemic. The second type is cutaneous leishmaniasis, in which skin lesions, mainly ulcers, are caused on exposed parts of the body. A third type is mucocutaneous leishmaniasis, where the mucous membranes of nose, mouth, and throat are destroyed. Thank you for watching. Subscribe and stay tuned for the next video.